تو جواب دے دیں. ایک انسان کسی بزرگ مرتبہ انسان کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے یہ گستاخی ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے اس سے بڑی گستاخی تو نہیں سوچی جا سکتی. اگر کلام کے اندر مفہوم اور نہیں ہو سکتے اور سیاق و سباق سے مفہوم نہیں سمجھنے چاہیے تو اس آیت کو اکیلے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. پھر فرمایا جنگ بدر کے موقع پر ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے وہ مٹھی نہیں چلائی جو تو نے کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی تھی، حالانکہ چلائی تھی. اذ رمیتا ہمیں پتہ ہے تو نہیں چلائی تھی، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے چلائی تھی. کیا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ سمجھ ہی نہیں، فہم ہی نہیں ان لوگوں کو. یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے ہم مرتبہ ہونا نہیں بلکہ کامل غلامی. یہ اعلان ہوا ہے قرآن کریم میں کہ خدا تعالیٰ کے کامل تابع اگر کوئی شخص ہے آج دنیا میں کائنات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنی کوئی مرضی نہیں چھوڑی، اپنے وجود کو کامل طور پر مٹا دیا ہے. اس لیے یہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی مرضی سے انگلی اٹھاتا ہے، اس کی مرضی سے انگلی گراتا ہے، اس کی مرضی سے سوتا ہے، اس کی مرضی سے جاگتا ہے، اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے، اس کی مرضی سے سکون کرتا ہے. کوئی اپنی خواہش باقی نہیں، ہر وقت خدا کی رضا پہ نظر ہے. تو اپنا کچھ بھی نہیں رہا، گویا کہ جب یہ کچھ کرتا ہے وہ خدا کا کرنا ہو جاتا ہے. یہ معنی ہیں. اور اسی معنی کی تائید میں ایک اور آیت ملتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی خواہش سے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے. ان هو الا وحی یوحى، یہ تو اللہ کی وحی ہے جو اس کی طرف کی جا رہی ہے. اب کلام محمد مصطفیٰ گویا خدا کی وحی ہے. تو جس شخص نے اپنا نفس مار دیا ہو، مٹ گیا ہو، یہ کہہ رہا ہو وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، اس کے بعد اس پر یہ اعتراض کرنا جب وہ ایک عارفانہ کلام کر رہا ہے انتہائی ظلم ہے. All those, there are certain guests here, I think they are English speaking, or perhaps if they are not English speaking, at least they don't know Urdu. If any of the audience on the right side who are using the headphones for translation would like to ask a question, I should love to attend to them as well. But because today's session is devoted for the Urdu speaking, so I should ask you permission to bear with me if I answer you in Urdu and my answer reaches you through the media of translation. Is that all, please? Would you kindly come to the microphone so that your question is also recorded? First, I would like to thank Mr. Nasir Ahmad for inviting me to your meeting. I have a very fundamental question, namely that the main difference between the major Islamic community and Ahmadiyya community is the appearance of Mahdi alayhi salam and Masiha. And now the main question is this, that according what I have been hearing so far, in Pakistan there is a lot of oppression, which I do agree with it, not to Ahmadiyya but to other communities as well. And also there is oppression in every other part of the world. But according to the Islamic beliefs and other non-Muslim beliefs such as Christianity and Judaism, when Masiha appears and when Mahdi alayhi salam appears, all injustice and dhulm and oppression would be removed. And from every house and every part of the world, the sound of justice and the voice of Allahu Akbar will be heard. Now we can see practically that none of these things has happened.
So how do you regard Ghulam Ahmad as Mahdi? And how do you regard him as Masiha? Why none of these things has happened? And if we say that this is something which is going to happen gradually, is not something which is according to the Quran and according to the Hadith. I explained that. Yes, because according to the Hadith, when Mahdi appears, there will be something like a big revolution and a big fight. Yes, I understand fully. Inshallah, I'll answer you. Please. Yes, thank you very much. Yes. This question has been asked of me so many times that the moment you started, I knew where you were going to end up. So I'll explain that, inshallah, in every respect. पहली बात, I'm sorry again to refer to speak in Urdu, please. पहली बात तो पहले मैं इसका तर्जमा कर दूं, कुछ शायद कोई दोस्त ना समझे हों. ये कहते हैं कि असल बुनियादी इख्तिलाफ जमात अहमदिया का और दूसरे इस्लामी फ़िरक़ों का ये है कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को मेहदी और मसीह मान रहे हैं. और दरअसल यही फ़र्क है. ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है. बाकी जितने फ़र्क हैं वो शाखसाने हैं इन चीज़ों के, इस इख्तिलाफ के ही शाखसाने हैं. बुनियादी फ़र्क यह है कि वो मादी और वो मसीह जिसके वादे किए गए थे उम्मत से, वो आ गया है कि नहीं, और अगर आ गया है तो कौन है. हम कहते हैं वो आ गया है और वो कादियान में पैदा हुआ, उसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था और उनकी ने एक जमात बनाई जो हम जमात हैं. बाकी कहते हैं नहीं, झूठ बोलने वाला था, कोई खुदा ने नहीं भेजा, अपनी तरफ से एक सिलसिला जारी किया. ये फरमाते हैं कि जहाँ तक हमने इस्लाम सुना और इस्लाम में आने वाले की पेशगोइयों का जिक्र पड़ा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी पर ईमान लाने की कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि उन पेशगोइयों में और मिर्ज़ा साहब के हालात ज़िंदगी में एक बुनियादी तज़ाद है. और वो तज़ाद ये बनता है कि पेशगोइयों की रूह से हम पर यह ज़ाहिर हुआ कि जब महदी आएगा तो दुनिया को अदल से भर देगा और हर तरफ अदल का दौरा होगा और इंसाफ की हवा चलेगी. और हमने ये देखा कि जब से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आए हैं, जुल्म उसी तरह जौर और सफाकी और जुल्म से भरी हुई है. और ये बात दुरुस्त नहीं निकली, ये दुनिया अदल से भर जाएगी. दूसरी बात, अगर मसीह मानते हो तो मसीह के मुतल्लिक सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई भी मानते हैं, यहूद भी मानते हैं कि जब मसीह आएगा तो क़यामत उसके साथ साथ आएगी और गोया उसके साथ जुड़ी हुई होगी. और उसके आने के थोड़े अरसे के बाद, बाज़ 40 साल कहते हैं, बाज़ इन्होंने नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ, बाज़ 40 साल कहते हैं, बाज़ और वैसा बयान करते हैं कि क़यामत जल्दी आ जाएगी. और ख़ुद अहमदियों को मुसल्लम है ये बात, ये करीबन 100 साल हो गए हैं मिर्ज़ा साहब को आए हुए और कोई क़यामत नहीं आई. तो इन दो अमूर की रोशनी में हम मिर्ज़ा साहब को सच्चा समझने का या आप सच्चा समझने का क्या हक़ रखते हैं, ये है इनका सवाल. इसके पस मंज़र में अब मैं आपको बहुत वसी जवाब है लेकिन मैं मुख्तसर करना पड़ेगा, इशारतन बात बातें कहूँगा, बात तफसील से बयान करूँगा. पहली बात, ऐसा अक़ीदा कि मसीह या महदी के ज़रिए वो वाक़या होगा, कुछ वाक़या हो जाएगा जो इससे पहले किसी नबी को खुदा ने